Hello everyone. So today I'll be talking about promissory notes, the very essential ingredients of promissory note, legality of a promissory note, how is it made, and I'll also be talking about bearer promissory notes or order promissory notes and different aspects of it. Okay, so now let's get into the lecture. A promissory note is basically a short-term credit tool or a credit instrument, right? It is a note that is made by a person who is liable to pay an amount. Through this instrument, a person basically makes a promise in writing, and he specifies or he acknowledges his liability that he has to pay a certain sum of money to a particular person, and along with acknowledging the liability he also promises to make that payment. All right, so a promissory note is a legal financial tool declared by a party promising another party to pay a debt on a particular day. It is a written agreement signed by the drawer with the promise to pay the money on a specific date or whenever demanded. So as you can see that it has been written that on a specific date, यहाँ पे लिखा हुआ है that it is supposed to be paid on a specific date or whenever demanded. तो इसका एक significance है. When we talk about a specific date, it can be termed as a time promissory note, a time specifically mentioned promissory note, and these are demand promissory notes. जैसे कि bill of exchanges में time bill होता है और demand bill होता है, उसी तरीके से promissory notes can also be paid based on a particular time that has been mentioned, or it can also be paid on demand, right? On site or on presentment it can be paid, right? And it is a written agreement and it is supposed to be signed by the drawer. We'll understand specifically about a time promissory note and a demand promissory note in the later examples of promissory notes that we see. In a promissory note, the sign of a drawer is mandatory, but the acceptance by the drawee is not mandatory. Basically, when we talk about a promissory note, it is a person acknowledging his liability and undertaking a liability to make payment. So he's promising to make the payment. So in this situation, the person who is promising to make the payment has to give a sign. Alright, and that is the nature of a promissory note, that the signature of the drawer is mandatory to signify his willingness to undertake the liability. The promissory note is a short-term credit instrument which is not related to any currency note or any bank note. So now let's look into how a promissory note actually looks like. As you can see, you have written over here that section 4 of the Negotiable Instrument Act 1881 specifically defines about a promissory note. We look at the definition in a very proper and a very particular aspect in the later slides. For now, let's look into the kind of transaction that is involved in a promissory note. So as you can see, let's look at a transaction that is happening between a seller and a buyer, and let's understand a situation in which a promissory note is issued. Alright, so for example, there is this seller A person, and there is this buyer B person. So now buyer B goes to seller A saying that I want a bulk of oranges to be supplied to me. Seller A says okay, so you can take the bulk of oranges and it is for around uh, 1500 rupees. Buyer B says that right now I cannot make the payment, but within 20 days or in the next particular time whenever you demand, I'll make the payment. So seller A says okay, no problem. So what do you want to do? So buyer B says that okay, I'll be signing a promissory note to you stating that I owe you 1500 rupees and that I will be paying it to you on such and such date, on such and such time and place. So he will sign a promissory note stating his liability to make the payment, and then he will be giving it to the seller A. So in this particular transaction, seller A is who? He's the creditor. He's the one who is giving the goods to buyer B, and buyer B is signing a promissory note undertaking the liability to make the payment.
तो अगर गुड्स ऑलरेडी सेलर ए हैज ऑलरेडी गिवन द गुड्स टू बायर बी, तो द ट्रांजैक्शन एक्चुअली चेंजेस इन द नेचर दैट व्हेन द गुड्स हैव पास्ड फ्रॉम सेलर ए टू buyer B actually owes certain amount of money which he has to pay to seller A. So now in this transaction in its entirety, seller A becomes the creditor in this transaction because buyer B is supposed to pay a certain amount of money to seller A, right? And buyer B becomes he becomes the debtor. So in a promissory note, because it is you promising to make the payment, you are undertaking the liability to make the payment, you being the debtor, you being the buyer, make the promissory note. So you are the drawer and the maker of a promissory note. Alright, you are the drawer or a maker of a promissory note who promises to make the payment to seller A or the creditor who is the payee, जिसको payment मिलने वाली है. Alright, so here a drawer and a payee is involved. So एक two party instrument है, एक instrument है जहाँ पे दो parties involved हैं. Now a promissory note, as I said, it is a negotiable instrument. Negotiable मतलब क्या? It should be transferable in nature, right? It should be transferable from its original holder to its new holder. It should be capable of passing on from its original holder to a new holder, right? So now seller A जो है supposedly एक transaction और देख लीजिए. प्रॉमिसरी नोट जो है बायर बी ने साइन करके सेलर ए को दे दिया. अब सेलर ए का ये सिचुएशन है कि सेलर ए नोस दैट यू नो बायर बी इज गोइंग टू मेक द पेमेंट एंड सेलर ए ओज सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू सी. तो सी जो है वो ए के क्रेडिटर हैं, ठीक है, ही इज क्रेडिटर ऑफ ए. इस सिचुएशन में सेलर ए वाज द क्रेडिटर ऑफ बायर बी डेटर थे. इस ट्रांजैक्शन में सेलर ए जो है वो डेटर है और सी जो है वो क्रेडिटर है. सो सेलर ए ओड 1500 रुपीज टू सी, right? Seller A was supposed to pay 1500 rupees to C. Now what seller A does it, he endorses the document to C. Endorsement का मतलब है when the maker or the holder of an NI signs the instrument for the purpose of negotiation on the back or the face of the instrument. तो seller A तो maker नहीं है, seller A जो है वो holder है because the promissory note has been given to seller A that you know I am promising to make this payment to you. So now he is the holder of the negotiable instrument and now seller A is passing it, seller A is negotiating it, he is signing the instrument for the purpose of negotiation, thereby transferring the title or the ownership in that instrument to C. तो सेलर ए जो है ये नेगोशिएट कर देते हैं इंस्ट्रूमेंट को सी को बिकॉज सी इज एज क्रेडिटर्स. A owes 1500 rupees to C. So C becomes the endorsee and in this situation में buyer B will be entitled to make the payment to C. Right? C is having the right to ask for the money from buyer B. Buyer B की एक liability accrue करेगी towards C to make the payment to C because A ने जो है A ने उस particular negotiable instrument को C को pass कर दिया है, right? So now seller A will make the payment to C through that particular negotiable instrument कि जो पैसे B A को देने वाला था वही पैसे B जो है अब C को दे देगा, right? Now C can also endorse it to D. जिस तरह से A ने C को endorse किया है उसी तरह से C जो है वो भी D को endorse कर सकते हैं. D जो है वो C के creditor है. C owes 1500 rupees to be paid to D. So now D will be the new endorsee, he will be the holder in due course and then D can ask for the payment from buyer B. तो इसी तरीके से promissory note जो है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम एन ओरिजिनल होल्डर टू न्यू होल्डर्स एंड इट इज ट्रांसफरेबल इन नेचर. ऑलराइट, दिस इज द नेचर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दिस इज द नेचर ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट. ओके, so next we are going to be specifically dealing with the definition, and with the aspect of discussing the definition we are going to go into discussing the very essential ingredients of a promissory note. All right, so as you know, section 4 of the Negotiable Instrument Act particularly mentions, signifies about a promissory note. Section 4 of the Negotiable Instrument Act 1881 mentions that a promissory note
is an instrument in writing. ओरल नहीं हो सकता. ओरली अगर आप कहें कि भाई आई विल पे यू 1500 रुपीज ऑन दिस पर्टिकुलर डेट टाइम, राइट, टू दिस पर्टिकुलर पर्सन, दैट वुड नॉट सिग्निफाई एज अ प्रोमिसरी नोट. प्रोमिसरी नोट हमेशा इन रिटन फॉर्मेट, इन पर्टिकुलर राइटिंग होना चाहिए, राइट. सो अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन writing, not being a banknote or a currency note. As I said that currency note जो है, it is money, it is a legal tender of money circulating in the economy. Promissory note को आप money नहीं कह सकते. Promissory note is a supplement to money. It is not money per se, alright. So a promissory note is an instrument in writing, not being a banknote or a currency note, containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. अब यहाँ पे 3 शब्द हमें स्पेसिफिकली जानना है और समझना है. वो ये है कि ये तो हम बाद में पढ़ेंगे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में, दैट इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग. व्हाट डू वी मीन बाय एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ इट, ये हम समझेंगे. बट वन थिंग दैट इज वेरी अननेसेसरी टू अंडरस्टैंड इज दैट a promissory note is payable only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. इसका मतलब क्या है? bearer कौन है? order instrument, bearer और order instruments क्या है? ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है. So understand that when we are talking about a particular kind of a bearer instrument is such जहाँ पे there is no particular person that is mentioned in the instrument, as in कोई एक इंसान का नाम नहीं लिखा हुआ है, और otherwise if we say that it is endorsed, it is a blank endorsement, it is a blank endorsement को हम bearer instrument भी कह सकते हैं, जहाँ पे एक particular person का नाम नहीं लिखा हो, एक पर्टिकुलर पर्सन को सिग्निफाई नहीं किया गया हो और एक इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स कर दिया गया हो. जैसे कि मैंने पहले कहा, एंडोर्समेंट का मतलब है जब आप एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को साइन कर देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन. सो अगर एक प्रोमिसरी नोट बनी है, प्रोमिसरी नोट पे आप सिग्नेचर करते हैं एंड आप जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं उनका नाम लिख देते हैं, तो वो एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है. सपोजिटली जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा दैट अ पर्टिकुलर प्रोमिसरी नोट इज रिवॉल्विंग बिटवीन ए, सेलर ए एंड बायर बी, राइट. सो नाउ सेलर ए जो है वो उस पर्टिकुलर प्रोमिसरी नोट को पास ऑन कर देते हैं सी के पास, राइट. सो नाउ ही इज एंडोर्सिंग इट इन द नेम ऑफ सी. So now if in that instrument he writes the name of C and then he signs on it, then it is a full endorsement, right. तो वो C का नाम लिख के साइन कर रहे हैं, उनको endorse कर रहे हैं, उनको negotiate कर रहे हैं by writing the name of C. That in that scenario is a order instrument जहाँ पे A is by his order making the instrument payable to C, right. A by his order is making the instrument payable to C. So now in this scenario जो payee है, जो holder है, that is A is making the instrument payable to C. तो यहाँ पे it is payable to a certain person, right, signed by the maker to pay a certain sum of money only to A or to the order of a certain person to A or on the order of A to C, राइट. तो यहाँ पे एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है. बियरर कब होगा? जब सी का नाम नहीं लिखा होगा, जब सिर्फ एंडोर्स करके छोड़ दिया जाए और उसको नेगोशिएट कर दिया जाए बाय मियर डिलीवरी, राइट. तो उस तरीके के इंस्ट्रूमेंट को हम बियरर इंस्ट्रूमेंट कहेंगे. एंड बियरर इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम और ज़्यादा जानेंगे और स्पेसिफिकली जानेंगे जब हम चेक्स पढ़ेंगे. बियरर चेक्स होते हैं एंड प्रोमिसरी नोट में भी हम विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज a bearer promissory note. Generally bearer promissory notes cannot be issued by any person in India except by the central government or the Reserve Bank of India. और ऐसा क्यों है वो भी हम जानेंगे. बट ये जान दीजिए कि bearer instrument का मतलब है जब आप किसी को इंस्ट्रूमेंट दे दें एंड इट इज निगोशिएबल बाय मियर डिलीवरी, राइट. उसमें इंसान का नाम लिखा होना जरूरी नहीं है. C's name is not necessary to be mentioned in the instrument. You can just sign it and you can make it transferable in nature.
राइट. सो वील अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस. इसमें जो डाउट है प्योरर इंस्ट्रूमेंट के बारे में, वील अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस इन द फर्दर लेक्चर्स व्हेन वी रीड अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंजेस. जब हम चेक्स के बारे में पढ़ेंगे, देन ऑल दीज पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स ऑफ बियरर एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स विल बी मोर क्लियर इन नेचर. There are certain formalities such as date, place, etc., which are usually found in a promissory note. The promissory note must be properly stamped for a particular value depending on the amount of the note as required under the Indian Stamp Act, and each stamp must also be duly cancelled. Right? तो एक particular promissory note जो है, it derives authenticity by virtue of getting a stamp under the Indian Stamp Act. Right? नोटरी से जाके आप उसको स्टैम्प करा सकते हैं एंड इसी से उसकी ऑथेंटिसिटी डिराइव होगी. द वैलिडिटी ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टैम्प ऑन इट. बिना स्टैम्प के कोई भी प्रॉमिसरी नोट इनवैलिड होती है. ऑलराइट. सो नाउ लेट्स गेट इनटू द पर्टिकुलर पार्टीज हु आर इन्वॉल्व इन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. हमने पहले भी पढ़ लिया कि भाई एक ड्रॉवर होते हैं. ड्रॉवर मतलब बायर बी, राइट, इज द बोरोवर और द डेटर हु प्रोमिसेस टू पे द डेट टू द मनी लेंडर. ड्रॉवी इज द इंडिविजुअल इन हुज फेवर द नोट इज प्रिपेयर्ड. पे जो है, राइट, पे जो है जिनको पे करना है, he or she is a creditor and provides goods or services on credit or lends the capital. The party who has loaned that is the creditor, right, the party who has loaned the money keeps the promissory note, and when the due is cleared, the drawee cancels the note and gives it to the drawer. Right? तो जो promissory note जो हमारे buyer ने बनाया था, वो drawer को drawee को दे देंगे, as in creditor को दे देंगे, A को दे देंगे, and A जब ये particular debt जो है ये discharge हो जाता है, तब drawee can cancel the note. He can cancel the note क्योंकि वो instrument discharge हो चुका है, उसमें जो payment है वो करी जा चुकी है, the payment has been made, and that is when the particular drawee cancels the note and gives it to the drawer. एंडोर्समेंट भी हमने समझा कि कैसे ए जो है वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स कर सकते हैं एंड नेगोशिएट कर सकते हैं फर्दर टू अनदर होल्डर, राइट, फ्रॉम ओरिजिनल होल्डर टू अ न्यू होल्डर. अ ड्रॉवर कैन एंडोर्स द इंस्ट्रूमेंट इन फेवर ऑफ अ थर्ड पार्टी एंड द एंडोर्सी विल रिसीव द मनी. सिर्फ ड्रॉवर ही नहीं, होल्डर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन ऑल्सो नेगोशिएट इट फर्दर. सो हमने देखा कि कैसे ए, बिकॉज ही वॉज अ होल्डर, वो ड्रॉवर नहीं है, वो क्रेडिटर है, वो ड्रॉवर नहीं है. ड्रॉवर इन अ केस ऑफ अ प्रोमिसरी नोट इज अ डेटर, है ना, डेटर ड्रॉवर है. तो ड्रॉवर ही नहीं बट अ पर्टिकुलर होल्डर कैन ऑल्सो एंडोर्स एन इंस्ट्रूमेंट टू अनदर पर्सन, बिकॉज इस सिचुएशन में he keeps the promissory note. As I said that the party who has loaned the money keeps the promissory note. तो वो holder हो गए हैं and the holder can transfer the negotiable instrument and he can also endorse it in favor of another party. All right. अब essential ingredients पे आ जाएंगे. Essential now we are going to be discussing about essential ingredients of a promissory note. When we particularly understand essential ingredients of a promissory note, we need to keep in mind the definition that was accorded to a promissory note. It is essential that a promissory note must clearly specify the person who has to make the payment. राइट, ड्रॉवर का नाम होना बहुत जरूरी है. कौन पे करेगा, किसने अंडरटेक की है लाइबिलिटी टू मेक द पेमेंट, ये जानना तो जरूरी है ही ना. पेमेंट कौन करेगा, अगर पेमेंट कौन करेगा यही ना लिखा हो पर्टिकुलरली, तो प्रॉमिसरी नोट तो ऐसे ही इनवैलिड हो जाएगा. Right? It should also mention the person who has to receive the payment, the exact amount to be paid, the conditions of liability, etc. No particular form of words are essential to constitute a promissory note. It may be in any form so long as it fulfills the requisites of Section 4 of the Act. The requirements are, first is, it should be in writing. एक पहला एसेंशियल है कि जो प्रॉमिसरी नोट है ये राइटिंग में होना चाहिए. एज इट इज वेरी क्लियर, मैंने कहा भी पहले कि प्रॉमिसरी नोट कभी ओरल नहीं हो सकता. राइट, यू कैन नॉट जस्ट प्रॉमिस अ पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी दैट डज नॉट रियली गिव अ पर्टिकुलर लीगल लाइबिलिटी. राइट, सो अ प्रॉमिसरी नोट शुड बी इन राइटिंग. राइटिंग मतलब इट कुड बी इन एनी फॉर्म, इट कुड बी इन प्रिंटिंग, इट कुड बी इन लिथोग्राफी, it could be in cyclostyling, or any other mode by which words, figures or numbers are represented in a visible form.
Though a note is usually written on paper, a note written on leather, cloth, linen, parchment paper, or any material that is capable of holding written words is in visible form is equally valid. So you can see the very acceptance of a promissory note. ऐसा नहीं है कि आपको पेपर में ही लिखना है. You can put it in a leather form, you can put it on a parchment paper. बस it should be written, it should be visible, it should be interpreted. पहले के दिन में जब पेपर्स इतने ज्यादा नहीं यूज होते थे, इवन लिनन में लिख के भी आप एक प्रोमिसरी नोट बना सकते थे. ऑलराइट, सो दैट इज द एसेंशियल ऑफ अ प्रोमिसरी नोट. Okay. The next essential ingredient is that it should not be a banknote or a currency note. As I said, that a promissory note is a supplement to money. It is not money, right? It is not money. It is a substitute for money, right? So इसी वजह से it cannot be a banknote or a promissory note, right? Even though यहाँ पे आप लिखते हैं that you promise to pay a particular person a certain sum of this money, 1500 rupees पे करने का promise आप ले रहे हैं, but ये supplement है money का. It is a substitute for money. It is not money in itself, right? Uh, third essential condition है that it must contain an undertaking to pay. uh, it becomes a promissory note if in addition to the acknowledgement of liability it also contains a distinct undertaking or a promise to pay. जैसे कि मैंने कहा कि आप एक लाइबिलिटी जरूर एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कहते हैं कि यू आर प्रॉमिसिंग टू मेक दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पेमेंट, देन वो प्रॉमिसरी नोट नहीं होता. प्रॉमिसरी नोट का इंटायरिटी ही है कि अलोंग विथ एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी you are going to make payment. That has to be stated, right? That you are going to make the payment, right? It becomes a promissory note if in addition to the acknowledgement of liability it also contains a distinct undertaking or a promise to pay. For example, अगर आप promissory note पे लिखे कि I owe Mr. A 1000 rupees, then that is not a promissory note. You are acknowledging a liability that you owe another person 1000 rupees, but that is not a promissory note. Promissory note वही है जहाँ पे आप along with the acknowledgement of liability you are making a promise to pay. Expressions such as I promise to pay या फिर I undertake to make the payment, ये कोई जरूरी नहीं है, right? But there should be a clear intention to make the payment, right? There should be an undertaking to pay, right? There should be an intention to pay that should be recovered, that should be understood from the promissory note. An instrument, after stating the amount borrowed and the rate of interest, contain the words payment to be made when demanded, right? सो इन दिस सिचुएशन बाल मुकुंद वर्सेस मुन्ना लाल का एक केस था जहां पे ये हुआ था दैट द प्रॉमिसरी नोट स्टेटेड दैट द अमाउंट बोरोड एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा था कि यू नो आई ओ दिस पर्सन 1000 rupees and the rate of interest is this, and then it was followed by the words payment to be made when demanded. As you can see, it was followed by the words payment to be made when demanded. Now the question was raised whether it was a valid promissory note or not, because वहां पे कहीं पे ये promise, ये particular words नहीं थे कि I promise to pay or I undertake to make the payment, but it could be derived from the promissory note because it is written that payment to be made when demanded. It could be derived that it was an undertaking to pay, there was an intention to repay, right? And this could be clearly understood from it. Even though I promise to pay नहीं लिखा है, but वहां पे एक intention to make the payment that could be understood, that could be inferred, and that is why it was a valid promissory note. And this was held in the case of Bal Mukund versus Munna Lal. The next essential element is the undertaking to pay must be unconditional in nature. कोई भी promissory note में certainty की बहुत ज़रूरत है, right? Certainty that a note is payable at all events is an absolute necessity, right? So certainty का मतलब क्या है? What are the various aspects of certainty? एंड अनसर्टिनिटी कब होगा ये हम जानते हैं, क्योंकि सर्टिनिटी और अनसर्टिनिटी बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं जो कि जिनका शायद होना सर्टन है, लेकिन कब होगा ये
सर्टेन नहीं है, तो क्या हम इसको एक अनसर्टेन इवेंट मानेंगे? नहीं, राइट? जस्ट लाइक death is a certain event. Every person on one day or time is going to die. Every person is going to die. A mortal human being is going to die. It's a certain event, but you do not know the date and time exactly when a person would die. So would you consider that as an invalid promissory note? Right? So let's get into what do we mean exactly by stating that the undertaking to make the payment should be unconditional in nature. So in this case, Carlos versus Fancourt, it was said that certainty is essential because otherwise it would perplex the commercial transactions of a mankind and diminish and narrow their credit and negotiability if paper securities of this kind were issued out into the world encumbered with conditions and contingencies, and the persons to whom they were offered in negotiation were obliged to enquire when these uncertain events would be reduced to certainty. राइट? तो यहाँ पे ये कह दिया गया है कि भाई जब हम नेगोशिएबिलिटी की बात करते हैं, जब हम कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, जब दो लोग क्रेडिटर और डेटर रिलेशनशिप में होते हैं, तो ऑब्वियसली अ क्रेडिटर इज एट अ हायर पेडिस्टल. सो आप क्रेडिटर को किसी भी ऐसे सिचुएशन में नहीं डाल सकते जहाँ पे you would put certain conditions on the payment, right? And the person who is supposed to get paid, he would have to continuously go and inquire whether a uncertain event has been reduced to certainty or not, right? So that is the legal wording, that unconditional होना चाहिए एक पर्टिकुलर promissory note को, एक particular certainty should be accorded to a promissory note, right? So there are certain events of uncertainty that have been recognized under the act per se. For example, if you have stated that I promise to pay B 7,000 rupees 2 years after the date if I am then living. So this accords certain uncertainty to the event that is going to happen. So ये एक invalid promissory note है. Second is, I undertake to pay C rupees 7,000 on B's death provided B leaves me enough to pay that amount. तो ये जो फैक्टर है that provided that B leaves enough to pay that amount, ये एक uncertainty accord कर देता है. The fact that B is going to die is certain. किसी भी डेट पे अगर B की डेथ हो जाती है तो वो एक certainty है, उसमें एक certainty है that B is going to die, obviously, right? So there is a certainty. But whether B is going to leave that amount or not, that is uncertain in nature. That is why it would not make a promissory note unconditional, right? The next factor is, I agree to pay B rupees 10,000 3 days after the death of C. So as I said that if it was only dependent on the death, then it is not a particular कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट, तो ये वाला जो प्रॉमिसरी नोट है ये वैलिड होगा बिकॉज हियर द इवेंट इज अ unconditional event. It is certain, there is a certain amount of certainty to death. तो यहाँ पे लिखा है कि 3 days after the death of C there will be a payment that will be made to B, right? So in this scenario this is a certain event, it is a valid promissory note. याद रखना कि ये एक valid promissory note है और ये एक invalid promissory note है, right? So the condition of making the payment, right, should not be there, right? There should not be any uncertainty, there should not be any uncertainty with regard to the condition of payment, right? Payment should be unconditional in nature, that you are going to make payment, that should be certain in nature. Payment होगी कि नहीं उसको आप कंडीशनल नहीं कर सकते कि भाई अगर ये इतना पैसा छोड़ जाते हैं तब पेमेंट होगी, तो ये अनसर्टिनिटी अकॉर्ड करेगी. डेथ जो है वो सर्टेन है, तो इसमें कोई भी पर्टिकुलर प्रॉमिसरी नोट इनवैलिडेट नहीं होगा. I promise to pay 20,000 to B if B marries C. So this is also conditional in nature. This is also going to invalidate a promissory note. A promises to pay 10,000 to B on or before 31st December.
क्वेश्चन आएगा कि भाई 31 दिसंबर तो डेट लिखा हुआ है, पर्टिकुलर टाइम प्रोमिसरी नोट है, तो ये कैसे आप इनवैलिड मान सकते हैं? ये तो इनवैलिड नहीं होना चाहिए क्योंकि टाइम लिखा है। लेकिन यहाँ पे भी एक गुगली है, वो है ऑन और बिफोर। ऑन और बिफोर से एक प्रोमिसरी नोट जो है वो एक तरीके से अनसर्टेन हो जाता है, बिकॉज इट लिमिट्स it limits the time within which the payment must be made, right? It limits the time on or before 31st December. It limits the time within which payment must be made, but does not fix the date. The word on or before introduces a contingency, and hence the instrument is not a valid promissory note, right? तो ये जो on और before है, ये याद रखना कि कभी भी अगर कोई इंस्ट्रूमेंट में on और before इंसर्टेड है तो ये एक इनवैलिड प्रोमिसरी नोट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि on और before जो है it invalidates the instrument because of the contingency that it introduces in a particular instrument, right? So this particular aspect on or before it introduces a contingency and hence makes an instrument a invalid promissory note। क्योंकि यहाँ पे पता नहीं ना कि जिसको पेमेंट करनी है, right? If supposedly you are saying that you are going to make the payment to B is the creditor, so you have written on or before 31st December. So do you expect B to come and ask every day, okay, today is 28th, will you make the payment? Okay, आज नहीं फिर कल। तो you cannot make a creditor fall into such kind of a situation, right? So that is why this would then invalidate a particular negotiable instrument. Alright, so जैसे कि मैंने कहा, a promise to pay is not conditional merely because it is made dependent on the happening of an event which is bound to happen according to the ordinary human expectations, though the time of its happening may be uncertain। जैसे कि मैंने डेथ के बारे में कहा कि डेथ जो है वो सर्टेन है, टाइम ऑफ हैपनिंग may be uncertain in nature but it will happen, that is a certain event। I agree to pay X rupees 1000 3 days after the death of Y is not a conditional undertaking to pay। So ये एक valid promissory note है, क्योंकि valid promissory note जो है वो unconditional होनी चाहिए, right? But it is conditional if the form is I agree to pay X rupees 1000 3 days after the death of Y if Y leaves me enough to pay that amount। तो ये जो है ये conditional हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक point है that if Y leaves me enough to pay that amount, so that would make it conditional in nature, and that is why the payment would be uncertain in nature, and that is why इसको एक invalid promissory note माना जाएगा। Alright, instrument making the payment conditional upon settlement of accounts after the conclusion of a pending litigation is not a valid promissory note, right? Where an instrument is payable on demand, it cannot be regarded as conditional in nature. Making a demand is not the condition of payment. The expression on demand is a mere technical connotation, meaning that the amount mentioned is payable at once. It does not import a condition that the demand ought to be made before payment can be enforced। Okay, इस चीज को जानने के लिए बिफोर यू अंडरस्टैंड अबाउट डिमांड एंड यूजेंस बिल, राइट, दो तरीके के बिल होते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि प्रॉमिसरी नोट्स आर डिमांड एंड यूजेंस। यूजेंस मतलब टाइम, बेसिकली टाइम, अगर टाइम लिखा हो दैट यू नो ऑन 3 days after the death 3 days after the death of C the amount is payable, तो 3 days जो है ये आपका यूजेंस टाइम है, ये टाइम है दिया हुआ कि इस दिन के बाद आपको पेमेंट मिल जाएगी, राइट? तो दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज कॉल्ड यूजेंस। बट अगर है कि पेबल ऑन डिमांड है कि आई ओ दिस पर्सन दिस अमाउंट ऑफ मनी एंड इट इज पेबल ऑन डिमांड, देन अगर आप कह रहे हैं कि इट इज पेबल ऑन डिमांड, मतलब जब भी वो प्रेजेंट करेंगे इंस्ट्रूमेंट को तब वैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, एंड इसको डिमांड कहेंगे, डिमांड टाइप ऑफ प्रॉमिसरी नोट कहेंगे, एंड दैट वुड नॉट मेक इट कंडीशनल इन नेचर। देख लेते हैं डिमांड और यूजेंस किस तरीके का होता है। Demand, that is the notes which is drawn payable at sight or on presentment, or in which no time is specified for payment. Usance is one which is expressed to be payable at a specified future date। ये आप देख रहे हैं, ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे श्री राम कुमार और ऑर्डर सम ऑफ ₹50,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। सो ये जो ऑन डिमांड लिखा हुआ है, ऑन डिमांड का मतलब ही है कि इट इज पेबल एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट, राइट? सो दिस इज अ डिमांड
promissory note, right? यहाँ पे on demand लिखा हुआ है, and as you can see it is an order instrument. It is payable to Shri Ram Kumar, and Shri Ram Kumar अगर इसको endorse करते हैं किसी और के नाम पे, if Shri Ram Kumar is endorsing it in the name of C, then he will sign on the instrument because he is the holder of the instrument, and he will pass it off to another person C. C का नाम लिख के, C के order में, it is an order instrument, उनका नाम लिखेंगे और नीचे श्री राम कुमार will sign and will transfer the instrument to another person, right? So it is an order instrument payable on demand, right? You can see what are the important essential ingredients. ये एक promissory note है, तो यहाँ पे signature of S Gupta, this is the person who is the drawer, जो बना रहे हैं, debtor drawer है, right? revenue का stamp जरूरी है. This is the amount that is payable, 50,000 rupees. It is payable on demand. This is the pay जिसको पे करना है, और order श्री राम कुमार can endorse it to another person, right? This is the पर्सन, पे का एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये है जहाँ पे ये पर्टिकुलर जो प्रॉमिसरी नोट है ये कहाँ बना है और कब बना है. इट इज मेड ऑन 17 February 2019 एंड इट इज मेड इन न्यू दिल्ली. इट इज पेबल टू श्री राम कुमार 220 एशियाड विलेज, न्यू दिल्ली, राइट? सो ये पे का एड्रेस है, राइट? सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट. ये एक डिमांड प्रॉमिसरी नोट है. दिस इज अ यूजेंस प्रॉमिसरी नोट. जैसे कि मैंने कहा, यूजेंस मतलब इट इज पेबल आफ्टर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम. सो 2 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे MS Singh and Company और ऑर्डर. ये भी एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है. बिकॉज प्रॉमिसरी नोट जो है, बियरर प्रॉमिसरी नोट्स इशू नहीं हो सकते. बियरर प्रॉमिसरी नोट्स पेबल ऑन डिमांड कैन ओनली बी इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. वो भी हम देखेंगे क्यों, राइट? द सम ऑफ 500 rupees ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड विद द इंटरेस्ट ऑफ 5%, राइट? सो दिस इज अ प्रॉमिसरी नोट विच इज पेबल, विच इज एन यूजेंस इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज टाइम लिखा हुआ है कि इस दिन के बाद पेमेंट हो जाएगी, तो 2 महीने के बाद पेमेंट हो जाएगी. तो ये एक यूजेंस प्रॉमिसरी नोट है. ओके, रेस्ट ऑफ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं. सो द नोट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर. द मेकर मस्ट बी सर्टन. जॉइंट प्रॉमिसरी नोट्स हो गए. अगर द प्रॉमिसरी नोट मस्ट पॉइंट आउट विद सर्टेनिटी द पर्सन हु अंडरटेक्स टू मेक द पेमेंट, राइट? The next point is that it should be an undertaking to pay money only. Promise to give certain amount of goods is not a promissory note, not a valid promissory note. A promissory note must be stamped according to the Indian Stamp Act, right? So next factor is, next particular essential ingredient इसका ये है that the RBI Act prohibits the creation of a promissory note payable on demand to the bearer of the note except by the Reserve Bank of India and the Government of India. In India specifically, bearer promissory notes are only issued by RBI. तो सेक्शन 4 प्रोहिबिट नहीं करता है. सेक्शन 4, जैसे कि आपने पहले डेफिनेशन में देखा कि सेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि bearer promissory notes इशू कर सकते हैं, राइट? लेकिन एक्चुअली अगर आप इंडिया के रूल्स देखें, सेक्शन 31 ऑफ RBI एक्ट 1934 पर्टिकुलरली प्रोहिबिट्स द क्रिएशन ऑफ अ bearer promissory note और बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड by any person in India other than the Reserve Bank. तो अगर सेक्शन 31 ऑफ RBI एक्ट कह रहा है कि भाई RBI के अलावा कोई भी पर्सन bearer promissory notes payable on demand इशू नहीं कर सकता, सेक्शन 4 इस तरफ से कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं लिखा है. सेक्शन 4 is specifically mentioning that a promissory note can be made payable to a bearer, right? It can be made payable to a bearer on demand. It nowhere gives a prohibition that promissory notes payable on demand cannot be issued by a general person, but section 31 में ये लिखा है. So when we harmoniously construe both the sections, when we read them together, right, and we harmoniously construe both the sections, we understand that when we talk about a promissory note, it has been prohibited by the government that a promissory note which is payable to the bearer, which is payable on demand, can only be issued by the government of India or by the Reserve Bank of India, right? Section 4 of the Act permits a promissory note to be made payable to the bearer, and a promissory note can also be made payable on demand. But a promissory note, if payable to bearer on demand is issued, it would be equivalent to a currency note which is issued by RBI.
अब हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि आरबीआई के पास सिर्फ इट इज द ओनली करेंसी मिंटिंग अथॉरिटी इन इंडिया, right? Nobody else can mint currency except RBI, right? So अगर RBI के पास एक मोनोपोली है to prepare to make currencies and distribute in the Indian economy, then RBI ये अपने मोनोपोली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, right? So it is the object is to protect the monopoly which is secure to the government to issue paper currency in the country and to prevent individuals from infringing the government or the Reserve Bank's monopoly, right? Section 31 जो है it prohibits the issuance of bearer promissory notes or bill of exchanges payable on demand by any person in India other than the Reserve Bank. The object is to preserve the monopoly which is secure to the government to issue paper currency of the country and to prevent individuals from infringing the government or the Reserve Bank's monopoly. इसको थोड़ा देख लेते हैं. So you can see this is a particular currency note, right? So you can see over here that अगर आप एक currency note को खोल के देखें, यहाँ पे it has been written that I promise to pay the bearer the sum of rupees 500, राइट? और यहाँ पे जो आरबीआई के गवर्नर है उर्जित पटेल, उनका यहाँ पे साइन लिखा हुआ है. इसका मतलब ये है कि जो आरबीआई के गवर्नर है ही प्रोमिसेस टू मेक द पेमेंट ऑफ 500 रुपीज टू द बियरर ऑफ दिस करेंसी नोट. तो ये क्या है? ये एक प्रोमिसरी नोट है विच इज पेबल टू बियरर. मतलब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में नाम लिखा होता है, बियरर में नाम नहीं लिखा होता है. हमने पहले डिस्कस किया, राइट? ऑर्डर में नाम लिखा होता है, बियरर में नाम नहीं लिखा होता. आप मार्केट में गए, आपने एटीएम से विड्रॉ किया पैसा और आपने जाके दुकानदार को 500 रुपए दे दिए. दुकानदार इसको इसीलिए एक्सेप्ट करता है बिकॉज ही नोज दैट इट इज अ लीगल टेंडर, राइट? इट इज अ लीगल टेंडर विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमी बाय द गवर्नमेंट. सो ऑन बेसिस ऑफ द प्रॉमिस दैट इज मेड बाय द गवर्नर ही इज एक्सेप्टिंग दैट मनी. तो ये जो करेंसी नोट है ये तो पेपर ही है ना, इसमें वैल्यूएशन जो है ये अकॉर्ड करता है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इसमें एक वैल्यूएशन देता है 500 रुपए का, राइट? अदरवाइज अगर डिमोनेटाइजेशन के पहले के इंस्ट्रूमेंट्स देखें उनमें तो कोई वैल्यूएशन नहीं है बिकॉज गवर्नमेंट हैज सेड दैट इट इज नो मोर अ लीगल टेंडर, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमी. सो इट इज ऑल अबाउट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? इट इज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक द बियरर to make a promise to the bearer to pay that kind of amount, right? So it is a bearer promissory note. अगर देखा जाए तो ये एक bearer promissory note है, a promise made by the government, right? And then it अगर आप इसको एक तरीके से देखें तो गवर्नमेंट जो है वो आपको पैसा देती है, यू आर द पे एंड यू आर एंडोर्सिंग इट टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स. आप यू आर एंडोर्सिंग इट बाय डिलीवरी, राइट? आप किसी को भी दे रहे हैं, ये डिलीवरी से आप सर्कुलेट कर रहे हैं मार्केट में. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पर्टिकुलर वेल नोन पर्सन को लें, अगर अंबानी को लें, अंबानी का एक बहुत ही ज्यादा नाम है, देयर इज अ लॉट ऑफ नेम एंड फेम एंड गुडविल ऑफ अंबानी. सो अगर अंबानी एक प्रोमिसरी नोट बनाता है, एक अंबानी अगर अंडरटेक करता है टू undertakes the liability to make payment, if Ambani undertakes the liability to make payment to a certain person, then in that scenario that kind of a promissory note will have that valuation कि उसने promise किया है that जो भी उसका bearer होगा, whoever will be the holder and the bearer of that promissory note, he will pay him that amount of money. Imagine if that kind of a promissory note gets circulated in the market, the valuation of that promissory note, people will believe it, right? So that is why एक bearer promissory note जो है अगर अंबानी issue करता है, it will have this similar kind of valuation as that of a currency note, and this would infringe upon the monopoly that is given to RBI. इसी वजह से section 31 of the RBI prohibits the issuance of bearer promissory notes payable on demand by any person in India other than the Reserve Bank. The object is to protect the monopoly which is secured to the government to issue paper currency of the country and to reserve and to prevent individuals from infringing the government or the Reserve Bank's monopoly. All right. So this is about the monopoly that is there on the government. This is the relationship between a promissory note and a currency note, right? Which is payable on demand and which is a bearer promissory note.
right? Here we are going to be talking about the government's monopoly. जैसे कि मैंने कहा that a negotiable instrument, particularly a promissory note, if issued by a renowned person, can acquire wide acceptability in the market. जैसे कि अगर मुकेश अंबानी का साइन किया हुआ नोट हो, right, similar to that available to a currency note. It is, however, necessary to maintain the monopoly of the central government over the issuance of national currency, and इसी वजह से section 31 जो है, it ensures that monopoly, right, and that is why nobody else can issue a bearer promissory note payable on demand. एक और कॉन्सेप्ट है विथ रिगार्ड टू प्रोमिसरी नोट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, दैट इज विथ रिगार्ड टू डिलीवरी अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट है दैट द डेटर जो है, द ड्रॉवर इज liable to pay certain amount of money to the creditor. तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, राइट? So all contracts of negotiable instruments are complete only on delivery. अगर ड्रॉवर ने प्रोमिसरी नोट बना लिया और उसने पे को डिलीवर ही नहीं किया तो वो एक इनवैलिड प्रोमिसरी नोट होगा, राइट? सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी दैट यू complete the negotiable instrument by making the delivery. So that is why there is a difference between executing a promissory note and delivering it to an appropriate party. The maker may execute the promissory note by signing it, but the completion of the contract of promissory note only takes place when it is delivered to the payee, right? ये इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ से आपको cause of action पता चलता है. जैसे कि सपोजिटली एक जॉइंट प्रोमिसरी नोट है, इट इज मेड बाय अ पर्सन इन इंडिया, ही हैज साइंड इट एंड इट इज ऑल्सो साइंड बाय अनदर पर्सन. ये एक जॉइंट मेकर है, बी जो है वो लंदन से, ही इज अ जॉइंट मेकर, ही हैज ऑल्सो साइंड द प्रोमिसरी नोट एंड ही गिव्स इट टू द पे इन लंदन, राइट? तो यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन जो है वो लंदन में अराइज करेगा बिकॉज डिलीवरी जो है वो लंदन में अराइज की है, राइट? बिकॉज डिलीवरी हैज बीन मेड इन लंदन बिकॉज द पे इज इन लंदन. सो दैट इज व्हाई jurisdiction, if the particular promissory note is dishonored, the jurisdiction of the court which can hear this particular case will be London, right? The London court. Why? Because the delivery has been made in London. यहाँ पे मेकर है, ये जॉइंट मेकर है, ये भी लंदन में है एंड इन्होंने डिलीवर किया है लंदन में पे को, तो यहाँ पे डिलीवरी यहाँ हुई है तो कॉज ऑफ एक्शन भी यहीं अराइज करता है. So here are the examples of a valid and an invalid promissory note. I promise to pay B or order rupees 500. I acknowledge myself to be indebted to B in 1000 rupees to be paid on demand for value received. तो यहाँ पे कहीं पे भी आई प्रॉमिस टू पे नहीं लिखा गया है, राइट? सेकंड वाले एग्जाम्पल में आई प्रॉमिस टू पे नहीं लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे टू बी पेड लिखा है. यू कैन इन्फर द इंटेंशन टू मेक द पेमेंट. सो दिस इज अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट. I have received the sum of rupees 10,000 from B. This amount will be repaid on demand. I have received the amount in cash because it has been said that it is repaid on demand. So payment का intention you can infer. So it is a valid promissory note. Shri Hari, I owe you rupees 500. ये एक invalid promissory note है. It only acknowledges the liability, but there is nowhere a undertaking to make the payment. So ये एक invalid promissory note है. I promise to pay B rupees 500 and all other sums which shall be due to him. Because the amount is not certain in nature, it is a invalid promissory note. Amount certain नहीं है. I promise to pay B rupees 500, first deducting thereout any money which he may owe me. अमाउंट सर्टेन नहीं है, इनवैलिड प्रोमिसरी नोट है. आई एक्नॉलेज टू माई लाइबिलिटी टू पे 1000 रुपीज टू जे. यहाँ पे भी देर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी बट देर इज नो अंडरटेकिंग टू पे. बिकॉज देर इज नो अंडरटेकिंग टू पे, यहाँ पे ये एक इनवैलिड प्रोमिसरी नोट है. All right, thank you. So here I am concluding the concept of promissory notes. I have tried including all the aspects of a promissory note. As you can see, we have included the essential ingredients. I have included what is the difference between a valid and an invalid promissory note, the various legal aspects of it, difference between a bearer promissory note that is there under section 4 and what is the law that has been laid down under section 31, what is the restriction that has been laid down under section 31, right? So these are certain important concepts of promissory note. जो पूरा का पूरा I have made it a crisp video on promissory notes per se, and इसमें आपको सारे concepts promissory note के यहाँ पे I have tried putting them down in a particular video. Thank you so much.